In the name of Allah, the most merciful, most gracious, and most beneficent. Prophet Muhammad said, "No two things have been combined together better than knowledge and patience." Now today I will deliver another lecture for class 12th chapter Human Diseases. And today we will start bacterial diseases. And in the bacterial diseases we will highlight very important disease that is called typhoid. Typhoid. Pakon dit me tay classification of diseases. Ethan want tay when beak disease a cognitive disease ak. So me want tay disease an varya qism. When kara was ak disease then highlight. So gay bacterial disease ak so go typhoid. Isn't typhoid cho it is a bacterial disease. It's a bacterial disease caused by Salmonella typhi. It's a bacterial disease. It's caused karan ak bacteria ak to be Salmonella typhi. This bacteria is ancho. It is rod shaped. It's rod shaped and gram negative bacteria. It's rod shaped bishi gram negative bacteria. Okay. Much sawal using ये typhoid cho ये लगभग तमाम वर्ल्ड में मतलब नहीं है तो ज़्यादा पहम चाहिए ये non-industrialized countries में मतलब ना it is most common in non-industrialized countries. ये non-industrialized countries में ज़्यादा पहम लग नहीं है ये typhoid. Okay. वही सवाल ये typhoid लगना होमत ये कद age group है जो 1 to 15 years of age group. It mostly occurs in children. ये locked in बच्चन गसन ये typhoid of 1 to 15 years of age. ये मन बच्चन 8 पे 15 वरी तक उम्र है इस्ते मन से ज़्यादा पाम गसन typhoid. बड़े से typhoid के साथ ये मन से ज़्यादा पाम गसन typhoid. वैसे जो उम्र about 2.5 million people suffer from typhoid per year in India. India's much washna amut 0.5 million look yam zan chi te man chu various mangasan typhoid. Okay. The lihaza karit yuzan ye typhoid cho India's much chi 5th common. It is 5th most common communicable disease in India. Okay. India's manchi 5th most common communicable disease. Communicable disease or manchi 5 numbers manchi zyada common chi India's manchi. Okay. So this is the causative agent of typhoid. In a typhoid कुछ cause करें. And but which was incubation period. Incubation period क्या है typhoid? Achoo 1 to 3 weeks. In a 8 पे 3 हफ्ते चल incubation period. So उनको incubation period को यम साथ ये bacteria body मज़बूत दाखल. तब पे युताइन ये बीमारी हैं अलामत नमूदार करी. उताइन वाला incubation period. Achoo 1 to 3
weeks. Ample को diagnosis ये diagnose करन एक टेस्ट के जरिए टाइफाइड तचना वाइडॉल टेस्ट. Typhoid is diagnosed by वाइडॉल टेस्ट. वाइडॉल टेस्ट के जरिए डायग्नोज गसन टाइफाइड. ओके, ये टाइफाइड बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी यह वचन यह ब्लडस मज यूरिनस मज तो बी स्टोलस मज. टाइफाइड बैक्टीरिया या साल्मन टाइफाइड बैक्टीरिया can be detected in यह स्टोलस मज डिटेक्ट कर, यूरिनस मज डिटेक्ट करना एंड ब्लड खूनस मज. ओके, गो वाइडॉल टेस्ट के जरिए ये डायग्नोज कर टाइफाइड. ये एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया. Which test is performed for? या वाइडॉल टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर. एग्जाम में आया ये. इसका करेक्ट रिस्पॉन्स है टाइफाइड. यानी टाइफाइड बीमारी जो वाइडॉल टेस्ट लगा अम सर डायग्नोज. अत मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ये किस बीमारी फहलान चूंकि कम्युनिकेबल डिजीज. यह कह फहलान. यह फहलान डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट ते. टाइफाइड is transmitted by direct or indirect. यह डायरेक्ट तो फहलान तो इनडायरेक्ट तो फहलान. यह डायरेक्ट ट्रांसमिशन सह ओरल. डायरेक्ट ट्रांसमिशन गसान ओरली सह by contaminated food and water. अगर इस contaminated food करो इस्तेमाल तब से टाइफाइड. ओके, डायरेक्ट ट्रांसमिशन यानी ओरल ट्रांसमिशन. ब्या गो इनडायरेक्ट गो यह सह गो फ्लाइज मन तम अनन यह टाइफाइड बैक्टीरिया वातन सान फुडस पे वातन या बाकी आर्टिकल्स तो अम ट्रांसमिशन गसान. हाउस फ्लाइज also spread typhoid. यह indirect transmission. यह direct transmission के यह indirect transmission through house flies गसान. ओके, अमे अलावा फ्लडस सती गसान टाइफाइड. क्या चूंकि मे वो तुम यह स्टूलस मज बैक्टीरिया. अगर वह कस टाइफाइड पेशेंटन यह स्टूल्स मतलब कुन जाए पे सैलाब फ्लड्स बारिश फ्लड्स तो अम टाइफाइड. फ्लड्स also spread typhoid. Okay. वह सवाल बेच वचन आमुत बम टाइफाइड गसान. टाइफाइड गसान यम जन कुकस यम फूड हैंडलर्स यम रेस्टोरेंटन मज या ईटिंग एस्टेब्लिशमेंटन मज तम ट्रांसमिट कर टाइफाइड. कुकस and food handlers in eating establishments also spread
typhoid. If zan cooks या food handlers रेस्टोरेंटस मज या होटलस मज फूड पकनावन ओर योर तो तम तह बनो ट्रांसमिट कर टाइफाइड मिसाल दिम बह मैरी मेलन was a cook by profession. Mary Mellon cook. She transmitted typhoid. From several years through the food she prepared. Okay, Mary Mellon cook by profession. दपान अम स्प्रेड कोर्मत वारियाह टाइफाइड कम फूड यह प्रिपेयर कर तमी पे अमिस नाव तमी अमिस मैरी मेलनस निक नेम आमुत दिन सह गो टाइफाइड मैरी अमिस निक नेम आमुत दिन टाइफाइड मैरी अमिस वन टाइफाइड मैरी कि योत स्प्रेड कोर्मत क्या टाइफाइड. ओके, so this is mode of transmission. At पर वशो इस बीमारी क्या अलामत सिम्टम्स क्या टाइफाइडस क्या सिम्टम अस कर फिक्र अमिस पेशेंटस टाइफाइड अमिस गोड़े गम टाइफाइड बेसिकली फीवर अमिस फीवर खसान अमिस हाई फीवर अमिस 39 to 40 degrees Celsius in first and second week. First and second week अमिस 40 degrees Celsius temperature and then decline in third and fourth week. Okay. अमिस तफ खसान फीवर यह तफे टाइफाइड अमिस 39 पे 40 डिग्री तान तफ खसान. ओके, या वन 103 to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यह 103 पे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट अमिस खसान फीवर. मगर फर्स्ट सेकंड वीकस मज तफ अमिस पे थर्ड तो फोर्थ वीकस मज कम गसान पे खसान अमिस अमिस बैक्टीरिया ये वातान बाकियन आर्गनन मज गाल ब्लैडरस मज गसान स्प्लीनस मज गसान बोन मैरोस मज गसान पे लैपस फीवर कर गाज. When the bacteria reach to gallbladder, spleen, bone marrow, they cause relapse fever. Relapse fever अमिस cause करन ये बाकियन आर्गनन मज वातान. अमे अलावा बे अलामत अमिस हेडेक कर कलदोद कर अमिस एब्डोमिनल पेन कर अमिस स्टमक पेन कर एब्डोमिनल पेन स्टमक पेन अमिस वोमिटिंग गसान अमिस डायरिया गसान लूज मोशन गसान. ओके, यानी ज्यादा पाम फीवर खसान बेस रिलैप्स फीवर खसान हेडेक कर एब्डोमिनल पेन कर स्टमक पेन कर वोमिटिंग गसान डायरिया यानी कि लूज मोशन मज गसान. ओके,
शाबाश तो बी क्या अमिस अमे अलावा बी अलामत अमिस कॉन्स्टिपेशन गसान अमिस कब्ज रोजान कॉन्स्टिपेशन गसान अमिस लॉस ऑफ एपेटाइट गसान लॉस ऑफ एपेटाइट अमिस माल वाल रोजान कुनी लॉस ऑफ एपेटाइट अमिस मन गसान माल रोजान अमिस कहीं अमिस बी गसान काम अमिस रोज colored rashes appear on chest and upper abdomen. Isn't ये chest छो तो be upper abdomen अच्छी बस rose colored इन्हीं गुलाबी पॉइंट यम आसन जितनी तिथि तम rashes खसन. Okay, the liver and spleen enlarges. अमिश liver तो spleen अस वारम खसन. अमिश अमेलाव inflammation गसन कात inflammation of ileum लॉकटे अंदर मुख्य parts ileum अच्छे inflammation गसन मांस वारम खसन कात अमेलाव ची मिस गसन मिस ब्याक चीज सो गो ये बैक्टीरिया आसन कछ इंटेस्टाइनल मज आसन ये मिस इंटेस्टाइनल ज्यादा डैमेज कर ये मिस इंटेस्टाइनस कर ulceration of intestine because there is perforation of intestine अच्छी intestinal ज़्यादा गसन perforation of intestine ज़्यादा गो ये ज़्यादा गो यह सही है ulceration गो अच्छी में ज़ख्म ही लगन अच्छी erosion गसन पाछी में perforation गसन pores गसन because there is intestinal bleeding अमिश खून दिवन intestinal bleeding गसन क्या erosion दिवन bacteria कथ intestinal वाल small intestines. Okay, तो यम चीज अलामत. These are the symptoms of what? Typhoid. मोशो इस लास्ट पे ऐसे कार्रवाई इन खतर इसके बचाव पन टाइफाइड निश सो prevention क्या करो इस एहतियात क्या करो इस गुड़ती करो इस काम इस करो isolation of patient ये patient था वो अलग थलग इमिस ये तकलीफ है इस टाइफाइड को तो एम्पथ करो इमिस काम इस भी करो इस मेलाव क्या काम इस करो personal hygiene था वो पान था वो साफ. Okay, तो भी था वो proper sanitation करो proper sanitation को पन उन्दपुक था वो साफ यमन waste साइसन human waste से बाकी waste यम करो dispose underground छाठी इस था वो proper sanitation भी करो इस patient अस काम इस दिमो bed rest तो भी करी ब्याक चीज काम इस दिमो light foods light foods करन इस्तेमाल light foods. Okay, तो भी क्या करो इस काम अलावा इसके बचाओ पन टाइफाइड निश इस करो काम we should wash hands after visiting toilet and before handling foods इस करो wash पानी hands या after visiting toilet इस करो wash hands by soap इत करो इस भी करो इस काम इस patient इस करो काम इनमें दिमो potato chips दिमो इनमें भी दिमोस boiled rice दिमोस banana दिमोस white bread दिमोस potato chips boiled rice banana भी दिमोस
white bread should be given to patients. Miss patient demo potato chips, boiled rice demos, banana demos, white bread demos, तीन चीज demos. Okay. बेह करो MLA इसको MLA क्या करो MLA demo मिस वैक्सीन इसका वैक्सीनेशन वैक्सीन demo कोस ताचन typhoid vaccine TB vaccine typhoid vaccine should be used typhoid vaccine पर इस्तेमाल करो या ताचन TAB vaccine सो पाइस दो बिश ब्याक vaccine typhoid oral vaccine should be given typhoid oral vaccine typhoid oral vaccine. Okay. यम छ कह एहतियात यम अस पजन करें यह सही for the prevention of typhoid. Be करो ब्याक चीज use boiled water करें इस्तेमाल be करो काम use properly cooked food. Use इस food करो इस cooking करो इस proper cooking करें properly करो इस cook ये bacteria इनके kill तो इस बचो infection निश. Okay. But all these are the preventive measures of typhoid. तो इनके बीच पान एड करें अमिक मतलब preventive measures. तो last में was treatment या control क्या चाहत अच्छे करें काम अमिचलिन antibiotics like chloroamphenicol, ciprofloxacin, ampicillin, chloromycetin are recommended drugs for typhoid. Okay. इसका antibiotics demo chloroamphenicol is a recommended drug. Ciprofloxacin, ampicillin, chloromycetin, all these are recommended drugs for typhoid. Typhoid is a curable disease. I think was even antibiotic. Okay. So this is all about typhoid. The Pagatalo is bad disease. So today we have concluded this typhoid disease. Okay, thank you. Thank you very much.